Namaskar learner, welcome to NIOS studio. Myself Dr. Roshan Lal, Assistant Professor, Department of Home Science, Lakshmi Bai College, University of Delhi. So today we will discuss about the methods of preservation. So we know that the food is very important for us and food preservation is very essential for us. Basically food preservation is required because in our country there is a very high population, and due to that high population we require large amount of food and the availability of food is very high. There is a diverse climate, there is significant food spoilage rate, and there is a consumer convenience. That's why we require the food preservation. जब हम फूड प्रिजर्व करते हैं तो ये बेसिकली हेल्प करता है आपके वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, दैट विल बी योर पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट, एंड इट विल एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ आवर फूड प्रोडक्ट. So basically whenever we will talk about the food preservation, we always have to look into the safety of our food so that it can be available throughout the year. First of all, we will discuss about the food preservation. What is food preservation? So food preservation is a kind of processing technique which are used to increase the shelf life of our food. Normally the food have a minimal shelf life. It may have a shelf life up to 2 days, 4 days, 6 days, some months, but whenever we are going for the processing, then the shelf life can be extended. Various methods can be applied for the preservation. With the help of that preservation methods, we can extend the shelf life for few days to several months. Food preservation is very essential as the degradation takes place when the food will spoil and it will reduce the quality of our food product. We know that the food degradation will take place just after manufacturing of the food product and just after slaughtering as well as harvesting of our food product. There are certain needs for the food preservation. Now we will discuss about the needs of food preservation, why this food preservation is required. First need is extend the shelf life of the food. This is our basic need. Suppose we have some food product like some fruits and vegetables are there, so that have a minimal shelf life, but whenever we are going for the preservation technique, with the help of that we can extend the shelf life of food product. Like if we will take an example of milk, so milk generally have 4 to 5 hours lifespan, but whenever we are going for the certain techniques like हम pasteurize कर रहे हैं milk को, sterilize कर रहे हैं, so due to that technique we can extend the shelf life. With the help of pasteurization we can extend the shelf life up to 2 days under refrigeration condition, but जब हम उसको sterilize कर रहे हैं तो जो हमारा milk है उसकी shelf life extend हो जाएगी for up to 3 months, 6 months. So that is very much important because with the help of food preservation we are going to increase the shelf life of our food product. The second need is development of our food product. The development of our food product means sometimes we use different kinds of technique for the food preservation. Sometimes we use our dehydration technique. Due to that dehydration we are able to produce different food, means we are able to produce new food product. Suppose we will take an example of potato. So in raw form the potato it will act as a root, means it can be served as a vegetable, but after dehydration we are able to produce a different kind of food like chips. Potato chips can be produced. The third need is establish food security. That is very much important because in our country the population is very high and the production is very high, but the spoilage rate is also very high. So we have to meet the food security so that the food will be available to each and every people in our country. So we require to preserve our food product. So due to that we can preserve our food product and we can extend the shelf life so that it will be available to each and every consumers. The fourth need is utilize seasonal fruits and vegetables. कई बार हमें जो fruits और vegetables हैं in season, these will be available in a bulk. Sometimes whenever there is a lots of production, so bulk में available है, but जब उसकी प्रोडक्शन रेट कम होता है, मीन्स जब सीजन नहीं होता, तो उसका जो क्वांटिटी है दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस एंड अल्टीमेटली इट विल इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो इफ वी विल preserve our food product, then we are able to utilize the seasonal fruits. Means whenever there is a bulk production, we can
process them, and with the help of that processing technique we are able to preserve them. Like if we will take an example of tomatoes, sometimes the production of tomato is very high, and whenever the production is high we can process it, and after processing we are able to produce tomato jam, tomato purees, tomato paste, so that can be produced. Similarly, with the help of processing technique we can also utilize different seasonal fruits for the production of different food product. Like when the apple production is very high, we can process it and we can produce apple jam. Similarly, if the carrot production is very high, then we can preserve it in the form of dehydrated or dried carrots. The next need is facilitate transportation of the food. As food has high moisture content, generally fruits and vegetables, they are rich in moisture content. So whenever the moisture content is very high, so we required a bulk of space for that. We required lots of space for the transportation as well as for the storage. But whenever we are going for the processing, like we are going for the dehydration, अगर हम उसको dehydrate कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके अंदर moisture content remove हो रहा है. With the help of that removal of moisture content, उसका volume and weight that is going to be reduced. So it will be easy to transport from one place to another place. Simultaneously, the storage will also become easy. अगर हमने preservation technique use की है तो हम उसको store कर सकते easily without any condition. Like if we are going to process our tomato and we are preparing tomato purees, so tomato से हमने tomato puree बनाई, so tomato के storage के लिए requirement है cold storage, means we required at least 10 degrees centigrade for the storage of tomatoes. But the tomato purees can be stored at a higher temperature. At room temperature it can be stored, and it can be stored up to 35 to 40 degrees centigrade. So due to that preservation technique, we are able to facilitate the transportation as well as the storage of our food product. The next need is retain the freshness and quality of our food product. As the food product is perishable in nature, so generally certain techniques can be used, like minimal processing can be used for the preservation of our food product. In minimal technique हम क्या करते हैं, हम minimal technique में we have to just wash our fruit or vegetables, we have to cut the unwanted portion, we have to trim it, the wound whatever is present we have to remove out from them. Sometimes we can also remove the seeds from the food product, and that food product can be kept in a proper packaging material and it can be stored in refrigerator or a freezer. So due to that minimal processing, we are able to maintain the freshness as well as the quality of our food product. So this technique is basically considered as a minimal processing technique, where we are using a minimal technique. With the help of that we are increasing the shelf life of our food product and we are able to preserve our food product. So before moving ahead, we should understand about the food spoilage, because जब हम बात कर रहे हैं कि food preservation, so first of all we have to understand the spoilage. What is food spoilage? So the food spoilage is a metabolic process that causes food to become unfit for human consumption due to certain changes in their physical, chemical and microbial properties. As the food have a unique properties that have a certain kind of physical properties, and it has a certain kind of chemical as well as microbial properties, but sometimes these physical, chemical and microbial properties is going to be changed, then the food product is going to be spoiled, and this spoilage will start immediately just after harvesting, just after slaughtering and just after manufacturing of the food product. So let's see, there are three examples in the slides. The first one is tomato, that is a fruits and vegetable commodity. The second commodity is rice. Basically it is a cereal and pulses, basically it can be considered in the cereal and pulses commodities. And the third one is our processed food, that is our bread. If we will see here, the tomato that is spoiled by the bacteria. The rice, it is also spoiled by the growth of fungi or mold. Similarly, the bread which is present in this slide, it also indicates there is a spoilage of the mold, means the mold growth has taken place in that.
सो अब हुआ क्या है, फूड हमारा स्पॉइल हो गया है, सो वी हैव टू रिड्यूस द रेट ऑफ स्पॉइलेज, वी हैव टू प्रिवेंट दिस स्पॉइलेज, देन वी हैव टू गो विद द स्पॉइलेज वेरियस काइंड ऑफ प्रोसेसिंग टेक्निक, various kind of preservation technique. So now we will talk about the causes of food spoilage, or we can say the reason of food spoilage. So we know that the microorganisms are very much responsible for our food spoilage, and particularly हमारे पास जो microorganisms हैं, वो microorganisms हमारे पास basically 3 टाइप के microorganisms हैं. First one is our bacteria, second yeast, and third one is mold. Yeast and mold को we generally collectively called as fungi. So in basic, the bacteria and fungi both are responsible for the spoilage of our food product, and both are the microorganisms. So these microorganisms, it can comes in the contact of our food product, और जैसे ही food product के contact में आएंगे, it will cause the spoilage. Due to that spoilage, the physical, chemical and microbial properties that is going to be changed. So here I am talking about the chemical properties also. वो क्यों? Because जब microorganism penetrate करेंगे तो वो कुछ toxic chemicals generate कर देंगे food के अंदर, and that is a cause of the food spoilage. The second reason for the food spoilage is chemical reaction. The certain type of chemical reactions are present like oxidative rancidity. It will takes place in our food product where fats react with oxygen, and due to that reaction it will cause the spoilage, means oxidation will takes place, and this will leads to the undesirable changes in their color, flavor, texture, appearance. So due to that oxidative rancidity, the food is going to be spoiled. अब केमिकल रिएक्शन से हमारा फूड स्पॉइल हो गया, माइक्रोऑर्गेनिजम्स ने हमारा फूड को स्पॉइल कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंजाइम्स. सो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स नेचुरली प्रेजेंट्स होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, और वो उनकी एक इम्पोर्टेंस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर. जब एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हेल्प करते हैं राइपनिंग में, उसका कलर डेवलपमेंट में, उसका टेक्सचर डेवलपमेंट में. दिस इज द एसेंशियल फीचर ऑफ द एंजाइम्स. But whenever there is uncontrolled activity of the enzymes, then it will cause the spoilage. So ultimately जब हमारा fruits and vegetables है, after harvesting the enzymes are continuously active. अगर हम उसको control नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो spoilage cause करेंगे, और वो जो spoilage cause होगी वो हो सकती है आपकी over ripening हो जाए, जो texture है वो soft हो जाएगा, और उसके अंदर off flavor develop हो जाएगा. So these enzymes, because these are essential for the development of fruits and vegetables, but in uncontrolled activity, in uncontrolled phenomena of the activity of the enzymes, so it will cause the spoilage. The next reason or next cause for the spoilage is insects and rodents. अब इंसेक्ट्स और रोडेंट्स हैं जो कि हमारे प्रोसेसिंग एरियाज़ में अगर अवेलेबल है, हमारे जहाँ पे फूड स्टोर हो रहा है वहाँ पे अगर अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे? वो डैमेज करेंगे फूड को, और फूड को डैमेज करने से वो आपका जो फूड है इट इज़ गोइंग टू बी इन्फेक्टेड बाय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन देयर इवन देयर विंग्स, इवन देयर टंग, इवन देयर टीथ, बट अवर the portion of that insect or rodents is going to be contact in our food product, वहाँ उसके टच में आएगा, और वहाँ से they will transfer the microorganism, they will transfer the bacteria. Secondly, the dropping their excreta, so that would also be cause the spoilage in our food product. So these are the 4 basic reasons due to that the spoilage will takes place. Now we will discuss about certain factors, the factors which are responsible for the food spoilage. So we already discussed कि हमारे पास कौन कौन से spoilage के कारण हैं, कौन कौन से रीज़न है spoilage हो रहा है. अब उस spoilage को कुछ factors हैं जो उस spoilage के रेट को इंक्रीज कर देते हैं. अगर हम उस फैक्टर्स को, उन पैरामीटर्स को इफ वी विल कंट्रोल दैम, तो हमारा स्पाइलेज है दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस. द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. द टेम्परेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड द मीजोफिलिक बैक्टीरियाज आर वेरी हाई.
अब मेरा मीजोफिलिक कहने का मतलब ये है कि जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अब वहाँ पे क्या होता है कि स्पाइलेज सबसे ज़्यादा होती है. At that particular temperature, the microorganisms it will survive and it will rapidly grow. उनकी जो ग्रोथ होती है वो एकदम से मल्टीप्लिकेशन that will be very faster. So at an intermediate temperature, the maximum growth will takes place. So if we will control the temperature, either we will decrease or we will increase. हम उसको कम भी कर सकते हैं टेम्परेचर को और बढ़ा भी सकते हैं. अगर हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो जो स्पाइलेज का रेट है वो आपका कम हो जाएगा. द सेकेंड वन इज मॉइस्चर. अब मॉइस्चर है जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर हाई अमाउंट में मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है. मोर देन 80% मॉइस्चर प्रेजेंट होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर. अब ये जो मॉइस्चर कंटेंट है वो काज करता है माइक्रोबियल स्पाइलेज. सो इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी हाई, देन द मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी हाई, देन द बैक्टीरिया इट विल गोइंग टू स्पाइल आवर फूड प्रोडक्ट. अगर उससे थोड़ा सा कम है मॉइस्चर कंटेंट, तब फिर रोल आता है ईस्ट एंड मोल्ड का. सो जनरली in our food there are three kinds of category. The first one is high moisture food, the second one is intermediate moisture food and the third one is low moisture food. So अब यहाँ पे हम moisture content की बात कर रहे हैं, तो if the moisture content is higher then the microbial and enzymatic reaction is very high. Due to that the food will spoil. The third factor is air. We know that in our air there is a 21% oxygen and that oxygen it will cause the spoilage of our food product. अब वो ऑक्सीजन कैसे स्पाइलेज करती है? एक तो ऑक्सीडेशन काज करती है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीजन की वजह से होगी जो कि हमारी एयर के प्रेजेंट है. सेकेंड जो स्पाइलेज होगी वो होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इट विल ग्रो एंड इट विल स्पाइल आवर फूड प्रोडक्ट. So these are the factors. Now we will discuss about the category of the food. The category of the food means our food it can be categorized on the basis of the shelf life of our food product as well as on the basis of perishability of the food product. So our food product it is generally categorized at perishable foods, semi-perishable food and non-perishable food. The perishable foods are those that can quickly spoil. Within few hours or days, the food can quickly spoil. And these spoilage will take place very rapidly, so we have to store them under a refrigeration conditions. Some examples like meat, poultry, fish, dairy products, ये हमारे सारे perishable की कैटेगरी में आते हैं. हमें इनको स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट होती है. हमें उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है फूड को. द सेकेंड कैटेगरी इज सेमी पेरिसेबल फूड्स, मीन्स दे जनरली दे हैव स्लाइटली लॉन्गर सेल्फ लाइफ देन द पेरिसेबल फूड्स बट दे स्टिल रिक्वायर द प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस. अब उसमें एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पोटैटो, नट्स, पास्चराइज्ड बटर, एग. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. अगर हम उसको कम टेम्परेचर पे ठंडे वातावरण में अगर हम उसको रख रहे हैं और एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट जहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ना हो और ड्राई प्लेस पे रख रहे हैं, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगी. द थर्ड कैटेगरी इज नॉन पेरिसेबल फूड्स, मीन्स दीज फूड्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द सेल्फ स्टेबल फूड. अब इनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, इनके लिए कोई प्रॉपर कंडीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइक रेफ्रिजरेशन, ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट. एग्जाम्पल्स आर सीरियल्स, हमारे पास अनाज है, गेहूं, राइस. ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे नॉन पेरिसेबल फूड के हैं. बीन्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सो दीज विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉन पेरिसेबल फूड. Now before going to the methods of preservation, we will discuss about the general rule of food preservation. Means we have to follow that rule, otherwise there is no use of the preservation. The first rule is the quality of selected raw material must be good. Means whatever food we are going to process, we are going to preserve, the quality it should be good. If we are going to select the inferior quality of food, तब क्या होगा? अब उस फूड को अगर इनिशियली वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इनिशियली डैमेज है या स्पाइलेज है, उसको हम प्रोसेस करके
हम उसको फर्दर फूड प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या प्रिजर्वेशन के लिए लेके जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो फिनिश फूड होगा उसकी सेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. So what we have to do, we have to select the good quality of the raw material, whatever raw material we are going to select. अगर हम fruit select कर रहे हैं, cereal select कर रहे हैं, और even we are going to select the milk as well as some fruit juices we are going to select. We have to select always a good quality. The second one is the appropriate methods of preservation must be selected. Means the method is also important. Suppose some food product can be preserved with the help of drying or dehydration, तो उसके लिए हम drying और dehydration करेंगे. कुछ फूड प्रोडक्ट है जो कि स्टरलाइजेशन से प्रिजर्व होते हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट है जिसको हम पास्चराइज करते हैं, किसी को ब्लांचिंग करते हैं. सो दैट मीन्स हमें जो मेथड अप्लाई करना है, इट शुड बी अप्रोप्रिएट, इट शुड बी सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट, सो दैट द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ दैट फूड प्रोडक्ट कैन बी रिटेन. लाइक अगर मेरे को पोटैटो को प्रिजर्व करना है तो मैं उसके लिए ड्राइंग के लिए जाऊंगा, मैं उसके लिए स्टरलाइजेशन के लिए नहीं जाऊंगा. अगर मेरे को मिल्क को प्रिजर्व करना है देन आई विल गो विद द स्टरलाइजेशन. क्लियर? द थर्ड रूल इज द प्रोसेस शुड बी प्रॉफिटेबल एंड एडवांटेजियस फॉर बोथ प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर्स. अब जो प्रोड्यूसर है, जो फूड को प्रोसेस कर रहे हैं, जो प्रिजर्व कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, इट शुड बी प्रॉफिटेबल फॉर देम एज वेल एज इट शुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंज्यूमर्स. सो दे हैव टू अडॉप्ट ए पर्टिकुलर टेक्निक दैट वुड बी प्रॉफिटेबल. लाइक एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं. सपोज हमें कॉफ़ी को, जो सोल्यूबल कॉफ़ी है, उसको ड्राई करना है. सो वी जनरली यूज द फ्रीज ड्रायर. सो फ्रीज ड्रायर यूज कर रहे हैं बिकॉज उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, उसका अरोमा है, दैट कैन बी रिटेन इनसाइड दैट. बट अगर उसको हम कन्वेंशनल ड्राइंग से करते हैं तो उसका अरोमा है, उसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर जो कैफीन टैनिन है, उसका लॉस हो जाता है. सो दैट इज सुटेबल फॉर द कॉफी. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्राइंग ऑफ पोटैटो और टोमेटो, तो हम उसके लिए अगर हम जाएंगे फ्रीज ड्राइंग में, तो अल्टीमेटली फ्रीज ड्राइंग इट इज ए कॉस्टली मेथड. सो उससे क्या होगा कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. सो द प्रॉफिट इट विल नॉट बी अर्न बाय द प्रोड्यूसर एज वेल एज इट विल नॉट बी गेट बाय द कंज्यूमर. द फोर्थ रूल इज द प्रोडक्ट मस्ट बी हाइजेनिकली प्रोसेस्ड टू कीप इट अनकंटामिनेटेड. मीन्स wherever we are going to process our food product, it should be clean, it should be free from the microorganisms. Means we have to apply the aseptic conditions. Aseptic conditions वो है जिसमें कोई microorganisms available नहीं होता उसके अंदर, और उस प्रोसेसिंग एरियाज में जब हम काम करेंगे तो हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो अनकंटामिनेटेड रहेगा. बिकॉज समटाइम्स जब हम फूड को प्रोसेस करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि जब हम प्रोसेसिंग के साथ साथ कुछ कंटामिनेशन आ जाता है फूड प्रोडक्ट के अंदर. सो वी ऑलवेज हैव टू प्रोसेस आवर फूड प्रोडक्ट इन ए हाइजेनिकली मैनर एंड अनकंटामिनेटेड एरियाज. द नेक्स्ट रूल इज packaging of the processed food must be adequate to maintain the quality of our food. So the packaging is also very much important, because whatever food we are going to process, it must be packed in a suitable container. Otherwise there is a no use of the processing or there is a no use of the preservation, because packaging अपने आप में बैरियर का काम करता है, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है. तो अगर हमने फूड को प्रोसेस कर दिया है, अच्छे से प्रोसेस किया है, अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट हमने लिया है, अप्रोप्रिएट मेथड हमने अप्लाई किया है, देन हमें एक पैकेजिंग भी उसके लिए, एक एडिक्वेट पैकेजिंग हमें उसके लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि जो फूड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को हम रिटेन कर पाए. अगर हम उस फूड प्रोडक्ट को अनपैक्ड फॉर्म में ही रखते हैं, सो क्या होगा, दोबारा से माइक्रोऑर्गेनिजम्स आएंगे, उसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे और वो स्पाइलेज काज करेंगे. ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन से फूड स्पाइलेज हो जाएगी. नेक्स्ट क्या होगा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होगी, लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो उसके अंदर दूसरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी. तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो हमारा स्पाइल होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. So there are certain methods that we have to apply for the preservation. So the methods
like drying, dehydration, alteration of the temperature, use of sugar, salt, vinegar and oil, chemical preservative and irradiation, so that we have to discuss. So ये हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो हमारा नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट उसमें रहेगा. अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. सो लेट्स टेक ए स्मॉल ब्रेक एंड वी विल मीट आफ्टर दिस ब्रेक एंड वी विल डिस्कस दीज मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आफ्टर द ब्रेक. हाँ तो 50% होगी स्लाइड अभी. वेलकम बैक लर्नर्स. सो ब्रेक से पहले हमने कुछ मेथड्स कुछ डिस्कस किया था जिसके बारे में हमने स्टार्ट किया था कि हम कुछ मेथड्स हम डिस्कस करेंगे. तो जो मेथड्स है उसमें जो फर्स्ट हमारा मेथड है वो है डिहाइड्रेशन एंड ड्राइंग. सो ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन हम क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट को फूड में से रिमूव कर रहे हैं. सो बेसिक प्रिंसिपल इसके लिए अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज द हीट एंड मास ट्रांसफर. हीट एंड मास ट्रांसफर मीन्स जब हम फूड प्रोडक्ट को हीट देंगे तो उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ मास इट विल रिमूव आउट. सो ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन बोथ आर द डिफरेंट टेक्निक बट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर सेम. देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस इन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन. जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है कि जब हम ड्राइंग करते हैं तो वो हमारे लिए एक अनकंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है लाइक सन ड्राइंग. अगर हम डिहाइड्रेशन पे जाते हैं तो दैट इज ए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर. लाइक हम कुछ फूड प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं, लाइक हम डिहाइड्रेटर को यूज़ करके कोई मशीन को यूज़ करके हम मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज द डिहाइड्रेशन. बट द concepts are same. Like if we will talk about the removal of water content, so drying और dehydration water content को remove कर देता है. It will help in the packing, transportation as well as storage of our food product.
It will also help in the reduction of the microbial growth as well as in the prevention of the spoilage. Because हमने पहले डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो वाटर कंटेंट हेल्प करता है. अगर वाटर कंटेंट हाई है तो बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड वो इजीली स्पाइल कर देते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को भी हम स्टॉप कर सकते हैं और उसकी ग्रोथ को हम स्लो डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट, फूड कैन बी रिकंस्टिट्यूट. वंस वी आर गोइंग टू डिहाइड्रेट आवर फूड प्रोडक्ट, एक बार हमने डिहाइड्रेट कर दिया है, देन इफ सपोज वी वांट्स टू रिहाइड्रेट इट, वी कैन इजीली रिहाइड्रेट it, and upon rehydration it will again gain their initial texture, it will again gain their initial shape. The sun drying is most economical process because we doesn't require any kind of machine. हमें किसी टाइप का कोई एटमॉस्फेयरिक एक पर्टिकुलर मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इट जनरली टेक्स प्लेस इन ए नॉर्मल एटमॉस्फेयर. For maintaining the quality, some another techniques like blanching can also be applied with the dehydration. Suppose we want to dry our potato and we are doing with the blanching process, means first we are doing with blanching, then we are going to dehydrate, then the quality of the dehydrated potato will be good because it will prevent the enzymatic reactions. Certain precautions we have to take place, we have to take before going with the drying and dehydration. The first one is the selection of the food. Means we have to select the food which can easily dry and which can easily dehydrate it at a low moisture content. So we always have to select such kind of food. The second one is process the food for effective and quick drying. So ultimately, before going with the drying and dehydration, what we have to do, we have to process it. Means we have to increase the surface area so that the effective drying will takes place. Sometimes suppose we are going with the sun drying, so the birds, insects, dust, it can contaminate, it can spoil our food product. So we have to protect it from that particularly. The next one is proper storage. After drying and dehydration, we have to keep it in a airtight and moisture proof packaging materials. Otherwise, एक बार आपने ड्राई कर दिया है, डिहाइड्रेट कर दिया है, so it will becomes hygroscopic. वो easily moisture को gain करने लग जाएगा. If the moisture content will be provided, अगर environment में moisture content है तो easily gain कर लेगा. So ultimately what we have to do, we have to properly store it, we have to properly pack it in a air and moisture proof container after the drying. The next method is altering the temperature. The temperature, we know that it is very crucial for the food as well as the microorganisms. The food that reside at a range like from 4 degree to 60 degree centigrade, that is called as the danger zone. Danger zone for the food, because at that particular temperature the microorganisms, the growth of microorganisms will be very high. It will rapidly multiply in the food product और वो rapidly spoil कर देते हैं. So with the help of change in temperature, either we are going to decrease the temperature और या हम temperature को increase भी कर रहे हैं, तो उसमें दोनों में क्या हो रहा है, हमारा food product है वो preserve हो रहा है. So the first one is low temperature preservation, जिसमें हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं. सो लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है या स्लो डाउन हो जाती है. क्लियर? बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे किल नहीं होते इसके अंदर, लो टेम्परेचर के अंदर. So there are 3 techniques for the low temperature preservation. The first one is refrigeration. रेफ्रिजरेशन में हम टेम्परेचर जो होता है हमारा 4 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स विल बी मिनिमम. द फूड इट विल रिमेन इन unfrozen conditions, mean it will not in going to in frozen conditions, it will retain unfrozen conditions. It will slow down the growth of microorganisms
and it's generally used in domestic practice. Like in our home we have refrigerators, so refrigerators में हम फूड को स्टोर कर देते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाती है. सर्टेन टाइप ऑफ फूड लाइक मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इट कैन बी स्टोर अंडर रेफ्रिजरेशन एंड द सेल्फ लाइफ कैन बी एक्सटेंड. The second technique, second low temperature technique is cold storage. This cold storage, it is generally applied in a commercial level. At industrial level, it is applied. In cold storage, the temperature range from 0 to 10 degrees centigrade, and that particular cold storage, we can keep our food product for a longer time and it will extend the shelf life, because we know that कि low temperature पे microorganisms की growth slow down हो जाती है और microorganisms धीरे धीरे grow करते हैं और उसकी spoilage rate भी कम हो जाता है, shelf life उसकी extend हो जाती है. The next technique is freezing. अब फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, अब तक हमने बात की रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज. तो रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज में क्या हुआ, हमारे पास जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर, वो वाटर कंटेंट लिक्विड फॉर्म में ही अवेलेबल था. इट इज नॉट गोइंग टू बी इन ए फ्रोजन कंडीशन, बट इन ए फ्रीजिंग कंडीशन द वाटर कंटेंट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दैट इज गोइंग टू बी इन फ्रोजन कंडीशन. मीन्स जो वाटर था अब उसका आइस बन गया. अब आइस बन गया है, वी नो दैट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर कंटेंट. अगर वाटर कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. सो उससे आपकी फूड प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी. इट आल्सो यूज एट इंडस्ट्रियल लेवल फॉर बल्क स्टोरेज लाइक मीट, फिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. द सेल्फ लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड अप टू ईयर्स. मीन्स हम फ्रीजर के अंदर 6 महीने साल तक हम फूड प्रोडक्ट को रख सकते हैं. द प्रोडक्ट मस्ट बी थॉर्ड आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द freezer. So that is a important, means whenever we are going to consume that food product, it must be thawed. The next one is high temperature processing technique. अभी हमने बात की low temperature processing. Low temperature में क्या था, microorganisms की growth slow down होगी. Microorganisms kill नहीं हुए, but at high temperature we are able to kill the microorganisms. For that we generally use certain techniques. The first important technique is canning. So canning is a method in which food is going to be preserved and it is going to be processed in a sealed and airtight container and thermally treated after that. So due to that processing technique, हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है फूड प्रोडक्ट के अंदर, वो हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स किल हो रहे हैं और फूड प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो रही है और फूड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी प्रिजर्व. So here we are using a thermal treatment. That thermal treatment is generally called as the appetization. So due to that thermal treatment, microorganisms, mostly the thermophilic bacteria that generally spoil our food product, it can be killed. The examples are canned fruits, vegetables, meat and fish. They generally process and packed in the form of canning. The second technique, second high temperature technique is sterilization. In sterilization, what we are doing, we are killing all the microorganisms, and generally temperature it will be above 100 degrees centigrade. So due to that high temperature, microorganisms cannot survive inside that and all the microorganisms can be killed. Like हमारे पास आसपास हम देखते हैं कि स्टरलाइज्ड मिल्क अवेलेबल होता है, फ्लेवर्ड मिल्क अवेलेबल है, दैट इज अ स्टरलाइज्ड मिल्क. सो दैट स्टरलाइज्ड मिल्क हैव ए हायर सेल्फ लाइफ. इट मे हैव ए सेल्फ लाइफ फ्रॉम 3 to 6 months. The next thermal technique is cooking that we generally follow at our domestic level. हम अपने किचन में फॉलो करते हैं. Certain kind of cooking techniques are there like pressure cooking, boiling, frying, microwave cooking that can be applied and ultimately क्या होगा, फूड प्रोडक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट है वो किल हो जाएंगे और आपका फूड प्रोडक्ट प्रिजर्व हो जाएगा. The next technique is pasteurization. So in pasteurization what we are doing, we are killing the microorganisms, but we are not killing all the microorganisms, we are just killing the pathogenic microorganisms, means the spoilage causing microorganisms. जो microorganisms हमारे लिए spoilage cause करेगा फूड के अंदर, केवल उन्हीं microorganisms को हम किल कर देते हैं पास्चुराइजेशन में. और ये टेक्निक जनरली फॉलो की जाती है मिल्क के अंदर और जूस के अंदर. The next technique is use of salt, sugar, vinegar and oil.
So these are generally considered as a primary preservatives. So these primary preservatives means like sugar and salt, they both will act as a osmotic regulators. Osmotic regulators means they will not allow, means they will help in the removal of moisture content from the food product. So whenever the proper concentration of salt and sugar is used for the preservation of a food product, in that case the moisture content from the food product, it will comes out and the concentration of solute is going to be increased on a food product. So due to that, the total solid content will increase and our food product is going to be preserved. Like sugar is generally used for the preservation, like if you are preparing jam, jellies and squash where we are using high amount of sugar, so it will act as a preservative. And salts can also be used for the preservation in pickles. The second primary preservative is vinegar. It is also called as the acetic acid. अब विनेगर का क्या काम है, वो pH को रिड्यूस कर देगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है pH. लो pH पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली ग्रो नहीं करते, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होते और हमारा फूड प्रोडक्ट प्रिजर्व हो जाते हैं. जनरली इस विनेगर को हम यूज़ करते हैं पिकलिंग के अंदर. Whenever we are going to make a pickles, we generally use acetic acid so that our food product can be preserved. The next one is oil. So oil basically एक बैरियर का काम करेगा, वो ऑक्सीजन को फूड प्रोडक्ट के कंटेक्ट में नहीं आने देगा और उससे क्या होगा कि आपका ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कम हो जाएगी और माइक्रोबियल ग्रोथ आपकी स्लो डाउन हो जाएगी. एरोबिक माइक्रोजम्स उसके अंदर ग्रो नहीं होगा. ये जनरली यूज होता है आपके पिकल्स के अंदर. द नेक्स्ट वन इज chemical preservatives. So generally most of the people and even every people that are health conscious, वो अब जब फूड लेने जाते हैं तो जनरली सी कि उसके अंदर कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव तो नहीं है. और इवन फूड प्रोसेसर्स दे आर आल्सो अवेयर अबाउट द केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. वो भी चाह रहे हैं कि कंज्यूमर की डिमांड है केमिकल फ्री, तो वो भी प्रोसेस करना चाह रहे हैं कि केमिकल फ्री ही प्रोसेस करें. बट जब कोई भी मेथड अप्लाई नहीं होता, लाइक हम हाई टेम्परेचर कर रहे हैं, लो टेम्परेचर कर रहे हैं, हम और दूसरी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं प्रिजर्वेशन के लिए, जब कोई भी टेक्निक उसके लिए अप्लाई नहीं, प्रिजर्व नहीं कर पा रही है फूड प्रोडक्ट को, देन अल्टीमेटली वी हैव टू गो विद द केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. बट सर्टेन प्रिकॉशंस वी हैव टू टेकन whenever we are going to use that chemical preservative, because these are synthetic in nature, these are chemically synthesized. So if we are going to use in excess amount, then it will be not beneficial for us. So वो हमारी health के लिए hazardous हो जाएगा. So it should be used in a specific permitted safe level. It should be effective and non-toxic. That should be the nature of the chemical preservative, कि वो effective भी हो, toxic भी create ना करे. It should have antimicrobial property and it should not impart any off flavor in the food product. So in our food processing industry or in food preservation, the two important chemical preservatives are there. The first one is sodium benzoate and second one is sulfur dioxide. The sodium benzoate, it is a salt of benzoic acid. Chemically ये एक salt होता है benzoic acid का, which is used in the preservation of colored fruit juices. So generally fruit juice को अगर वो like आपका orange juice है, आपका pineapple juice है, so उस केस में हम उसको sodium benzoate को use करते हैं. The general amount is 0.06 to 3%. It will vary, it depends on the type of the food and it also depends on the amount of microorganisms present inside, the initial load of the microorganisms present inside that. The second preservative is sulfur dioxide. It is generally obtained from the potassium metabisulfite. It is also called as the KMS, potassium metabisulfite. So basically potassium metabisulfite क्या काम करता है, ये काम करता है source for the sulfur dioxide. So sulfur dioxide is a gas, वो आपके potassium metabisulfite से मिलेगी और because it is a gas it can easily dissolve. So that's why it is more effective than the sodium benzoate. ज़्यादा effective होगी और इसकी जो amount है it has a general use in the 0.3% in case of squashes. Next technique is irradiation. So irradiation it is a novel technique. Novel हम इसलिए बोल रहे हैं because
इस टेक्निक को हम यूज़ करके हम अपने फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मेंटेन कर रहे हैं और हमारा फूड प्रोडक्ट प्रिजर्व भी हो रहा है. सो द टू टाइप ऑफ रेज आर जनरली यूज टू किल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. द फर्स्ट वन इज गामा रेज and second one is ultraviolet rays. So both the rays, it will acts in the preservation of our food product. So generally जब हम इन rays को use करेंगे तो वो food product के surface के ऊपर reaction करेगी, contact में आएगा surface से और वो food product को preserve करेगी. अब इस टेक्निक से फूड प्रोडक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है. सो ड्यू टू दैट हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन कर पा रहे हैं. एडवांटेजेस क्या है? इट कैन स्टरलाइज द फूड विदाउट हीटिंग. द सेकंड, द प्रॉपर्टी और एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू रिटेन इन द फूड, बिकॉज अगर हम उसको हीट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट जनरली लूज व्हेन एवर वी आर गोइंग विद द हीटिंग. बट अगर हमने हीटिंग ही अप्लाई नहीं की है तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू वो रिटेन रहेगी. इट इज मोर यूजफुल इन द पैक्ड फूड, ग्रेन्स, स्पाइसेस, and it is generally used to inhibit the sprouting of potato and onions. So if you will see here in the picture, you will find the potato that are going to be germinate. अब वो germination हो रही है, अब germination को हमें stop करना है. So what technique we can apply? We can apply the irradiation technique. So with the help of that, germination उसके अंदर stop हो जाएगा, enzymatic activity stop हो जाएगी और आपका जो food product है उसकी self life, लाइक अगर पोटैटो की बात कर रहे हैं तो पोटैटो की सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी. बट देर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस. अब डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज एन एक्सपेंसिव टेक्निक, दैट इज द मेन डिसएडवांटेज. द सेकेंड, क्वेश्चन नीड टू बी टेकन ड्यूरिंग द यूज. मीन्स whenever we are using the radiation, so these radiation are harmful for human body. So ultimately जो भी फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है कोई तो ह्यूमन बींग्स होगा. So that is dangerous for them. So we always have to taken care for that. Means we always have to follow the guidelines what we have to follow during the irradiation technique. और जब हमारा फूड irradiate होता है तो उसके ऊपर हम एक लेबल, उसके ऊपर एक लोगो लगता है. सो जो आप कॉर्नर पे जो लोगो देख रहे हैं ग्रीन कलर का, सो दैट इज द लोगो फॉर द irradiated food. It must be applied on the packet of the food. It indicates that food is irradiated and it is safe for the consumption. Now we will talk about the common preservation methods for daily use at our home. Like हम अपने घरों में भी कुछ मेथड्स हैं हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो प्रिजर्व हो जाए, जो फूड वेस्टेज कम से कम हो और उस फूड प्रोडक्ट को हम थ्रू आउट ईयर कंज्यूम कर पाए. द फर्स्ट, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन. अभी तक हमने कॉमर्शियली पढ़ा कि ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन से हम कॉमर्शियली फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं. बट एट आवर डोमेस्टिक लेवल, हमारे घरों के अंदर भी हम ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन कर सकते हैं. ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन से व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक द पोटैटो चिप्स. लाइक हमने पोटैटो को कट किया थिन पीसेस में, उसको सन ड्राई किया और वी आर एबल टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटैटो चिप्स. ड्राइंग ऑफ फेनुग्रीक एंड पेपरमिंट लीव्स, मेथी और पुदीने को हम ड्राई करके हम उसको थ्रू आउट ईयर कंज्यूम कर सकते हैं घरों के अंदर. मेकिंग पापड़, पापड़ को भी जनरली सन ड्राई करके उसको स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए एंड इट कैन बी यूज फॉर ए लॉन्गर टाइम. द सेकेंड common preservation method that can be used at our domestic level or at our home scale, that is pickling and fermentation. So जब भी हमारे पास सीजन अवेलेबल है, जिस भी फ्रूट का या वेजिटेबल का सीजन अवेलेबल है, सो अल्टीमेटली हम उस फ्रूट्स और वेजिटेबल की पिकलिंग कर सकते हैं. लाइक लेमन, मैंगो, ग्रीन चिली, कैरेट. सो दीज fruits can be used for the pickling. But as I told you, whenever the season is available, because at that time the bulk quantity will be available at a cheaper rate. So हम क्या करेंगे, बल्क में परचेज किया, प्रोसेस किया एंड पिकल बना दिया एंड इट कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर. इससे हमारी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है इट विल बी इम्प्रूव. हमारा जो फूड वेस्टेज है वो भी कम हो रहा है. नेक्स्ट,
हम जो कर सकते हैं पिकलिंग एंड फर्मेंटेशन, दैट इज मेकिंग ऑफ सरक्रोट एंड किमची। तो बेसिकली जो सरक्रोट इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैबेज, किमची भी आपकी कैबेज से और रेडिस से आपकी बनती है। सो अल्टीमेटली जब हम इनको फर्मेंट कराते हैं तो आपके डिफरेंट फूड प्रोडक्ट सरक्रोट एंड किमची भी हम घर के अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रीजर्व। सो प्रीजर्व बेसिकली लाइक अगर हम बात करें आंवला मुरब्बा, दैट कैन बी मेड एट आवर होम, means we can use a high consistency of sugar syrup for the preparation of आंवला मुरब्बा। और उसमें क्या होगा कि मॉइस्चर कंटेंट जो वाटर एक्टिविटी दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस इन द आंवला, और आपका आंवला मुरब्बा प्रीजर हो जाएगा। मेकिंग ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ कैंडी लाइक जिंजर कैंडी, पाइनएप्पल कैंडी, दैट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड। टूटी फ्रूटी कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड with the help of preservation. Next, making of aam panna, that can also be prepared during the season of mango. We can prepare a aam panna and it can be used throughout the year. The next common preservation method is refrigeration and freezing. Refrigeration and freezing वो भी हम अपने घरों में easily apply कर सकते हैं. Like we all have the refrigerator at our home. So we can use that refrigerator for the storage of certain kind of food like milk को store करना है, fruits को, vegetables को हम store करना है, हम refrigerator को use कर सकते हैं. Next, freezing भी कर सकते हैं because in our refrigerator there is a portion that have a lower temperature. उसको हम as a freezer use कर सकते हैं और उस फ्रीज़र के अंदर हम जब सीज़न है कैरेट का, पीस का, कॉलीफ्लावर का, सो उसको हम मिनिमली प्रोसेस करके, मिनिमली मीन्स उसको वॉश करके, ट्रिम करके और उसको कट करके फिर हम उसको प्रॉपरली पैक करके उसको फ्रीज कर सकते हैं फॉर ए लॉन्गर टाइम. सो दैट कैन आल्सो बी अप्लाइड एट आवर डोमेस्टिक लेवल. एंड द नेक्स्ट domestic practice is cooking that generally follows. So cooking like pressure cooking and boiling that can be applied at domestic level. जो हम जनरली करते हैं, हम प्रेशर कुकिंग कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, माइक्रोवेव कुकिंग कर रहे हैं, फ्राइंग कर रहे हैं और उससे हम फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं. सो लर्नर्स, हमने आज मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन पढ़े. हम प्रिजर्व कैसे कर पाएंगे फूड प्रोडक्ट को, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर पाएंगे और प्रिजर्वेशन से पहले कौन कौन से कारण हैं फूड स्पाइलेज के, वो सारे आज हमने सब डिस्कस किया. सो आई होप आप लोगों को सब अच्छा लगा हो. सो थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.